असल में जब आप चीज़ों को इन बुक्स में गलती हो जाती है, ठीक करेंगे तो कोई मसला नहीं होता। मैं चले इसको दोबारा एक और एंगल से देख लेते, वेदर दिस कुड बी करेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो आना ही आना है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ n जो है t प्लस एच टी 1 के बराबर था लेमडा टी एच ओ ऑफ एच। एच तो इंटरवल था, वो एच एच हमारा बिल्कुल ठीक आ गया। और लेमडा के साथ टी का फंक्शन है, तो टी का फंक्शन वही होगा जो कम वाले टाइम में है। तो टी प्लस एच है ना, तो कम वाले टाइम को हमें पकड़ना होगा। अगर इसी डेफिनेशन को हम यहाँ लेके चलें तो हमारा ये कम वाला था, ठीक है ना। टी और एन तो हमारा इंटरवल था, और जो हमारा कम वाला टाइम था वो एस प्लस आई माइनस 1 टी ओवर एन था। सो ये हो जाएगा एस प्लस आई टी ओवर एन, और एक आ जाएगा एस माइनस टी ओवर एन। तो प्रॉपर फंक्शन ये होगा कि यहाँ पे एस प्लस आई टी वन ठीक है, मगर ये एक्चुअली होना चाहिए एस प्लस आई माइनस 1 टी। जो यहाँ ये वैल्यू थी वो वैसे स्टूडेंट तो आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता सकता है फ़र्क नहीं पड़ना, चूँकि वो टी और एन ने वैसे ही ज़ीरो हो जाना है। बहरहाल मगर मैंने आपको गलती बताई है, मेरा काम तो ये कि बुक में करेक्शंस होती हैं, तो टीचर का काम है बताना। प्रॉपर विल बी दैट दिस शुड बी आई माइनस। इससे परेशान ना, हर चीज़ सही हो जाती है जब आप करेक्ट करते हैं, तो इनकी खुद ही गलती सही हो जाती है। ऑलराइट, सो and we know the number of events are always independent. So when n is large, numbers of independent is approximate a point. This we have seen. Poisson's random n होगा तो वाकईतन Poisson's random वेरिएबल ही बन जाएगा with mean of, now you can see that what will be the mean. So this is the probability of occurrence in one eye that an event occurs. So the probability that it will occur in all the intervals will be just summing this up from I is equal to 1 to I is equal to n. Alright, मैंने बस यहाँ पे आपको ही बताया कि बेहतर है कि यहाँ पे हम I माइनस 1 यूज़ कर लें, वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम अपने प्रॉपर रखें। अब आप देखें OTON will be constant for all n, so it will just come outside the summation. This will become n times OT over n, right? यहाँ पे अभी तक हमने ये assume किया है कि बेहतर है कि यहाँ पे I माइनस 1 यूज़ किया जाए। Now I apply the limit to this whole of n tends to infinity when we have just seen that n tending to infinity, n OTN, this tends to 0. ये तो सारा उड़ गया आपके पास। अब बेसिकली आपके पास ये सारी टर्म जो है वो बच गई, ठीक हो गया। अच्छा पहले ये देख लें, चलें आई माइनस 1, फिर पहले आई के साथ देख लेते हैं, फिर आई माइनस 1 भी समझ आ जाएगा। ऑलराइट, so we know that n is tending towards infinity. This means that this summation sign will definitely go towards an integral sign. All right, and t over n, this is becoming small and small and small. All right, so as n is tending towards infinity, so this means that t over n is tending towards a very small value. All right, and so I will take this t over n to be equal to d over y dy as n is tending towards infinity. Now you could see here that when I is equal to 1, then in that case t over n, where n is tending to infinity, means that this total factor is going towards 0.
अगर यहाँ पे आप i-1 भी पुट कर देंगे तो फिर भी सारा का सारा जीरो ही जाएगा. So you could basically see that lambda, when I is equal to 1, lambda is actually starting from S. So we can say that lambda starts from S. All right. And so, you know, this is now, this total is actually y. All right. And its dy is t over n, because, you know, S is 0 and the variable is actually t over n. So this variable starts from S. And when this I goes to n, so you can see n cancels. In previous case, this will be I-1 tending towards n. All right. असल में ये और सिंप्लीफाई हो जाता है. अगर हम यहाँ पे I-1 लिखते हैं ना, तो एक्चुअली हम स्टेट्स को ले जा सकते हैं. उसने हम नाम दिया था ना, 0 से n ही नाम दिया था ना हमको. अच्छा, तो इसने इस तरह से किया ना, स्टेट्स का नाम उसने 1 से n कर दिया है. तो बहरहाल आप जिस तरह मर्जी कह लें. So when I-1 is tending towards n, so you can see that n cancels, and then that will be s plus t. So your y value is tending towards s plus t, so upper integral will change to s plus t. This is already y, and the rate of change of y is already t over n, that is the interval h which is tending towards 0, becoming very, very small, is your dy. So you can approximate this Bernoulli approximation as Poisson's mean value of the Poisson process, where the Poisson process was non-homogeneous. Another thing is that if you sample an ordinary Poisson process, you can generate a non-homogeneous Poisson process under certain conditions. And what are those conditions? Again, let us say that I have an ordinary Poisson process with a constant, with constant lambda, constant arrival rate कह लें या intensity rate कह लें, rate of arrival of events कह लें, जिस तरह मर्जी कह लें. Simple Poisson process. Now, what I do, I say, suppose that an event occurring at time t is independent of what has occurred prior to t. So we say a new event occurred at t which is independent of nt. This is the basic definition of the Poisson process. But the problem is that this is the actual Poisson process is not non-homogeneous, but we are trying. The actual Poisson process is, it is stationary, it is independent, it is not non-homogeneous, but we want to make it non-homogeneous. So what we do, we say that we deliberately change it, and we say, yes, that event occurs, it is independent. Now, it is counted with probability pt. It is counted with pt and is not counted with 1 minus pt. So NCT is good. It is the number of counted events by time t. But now by time t, it must also include the new event that was independent before, but it can be counted with probability of pt. It could be counted or not. Then in that case, this previous nt now becomes nct with a non-homogeneous Poisson process, because now its nt is lambda pt. देखिए ना, असल में तो lambda t होना चाहिए था. हमने पढ़ा काउंटिंग में नंबर ऑफ जो है इंटरवल्स वो lambda t रहता है, मगर यहाँ पे मसला है कि शायद काउंट करें शायद ना, अगर आपको इस प्रोबेबिलिटी भी pt है, ये प्रोबेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट है, इसने सारी गड़बड़ कर दी. तो वंस योर
Number of count becomes lambda pt, hence your intensity becomes a function of t, which is lambda t. And you can also verify this. So for 0 NC, NC will be 0. And number of counted events in S to S plus T, S solely depends on the number of events in S to S plus T. S we know it is independent of what has occurred prior to S. So number of is independent of the process of counted events prior to S. Thus, independent increments are there. This has already been shown. Then you can see, then we know that events in interval t will be equal to number of events in t plus h minus number of events in t. And for this to be greater than or equal to 2 means that this will be less than the probability of n, not nc. देखिए यहाँ पे चक्कर चला है n. जाहिर है भाई एनसी में तो शायद आप काउंट करें शायद ना काउंट करें, ये भी बड़ा चक्कर है कि टीएथ को आपने शायद काउंट ना किया, प्रोबेबिलिटी के साथ काउंट होता है वो, मगर यहाँ तो आपने पक्का पक्का काउंट किया था, तो ये तो इससे भी लेस है और ये आपको पता है ऑफ एच है, तो लिहाजा ये भी ऑफ एच होगी, ये भी प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी। तीसरा है कि जी इसकी वन वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आप कहेंगे हाँ जी वन वाले में भी वही हम कह सकते हैं कि वन हो सकता है गिवन कि ये वन हो। अब प्रोबेबिलिटी के टी टी प्लस एच पे आपके पास वन इवेंट आए प्लस यही के एन सी वन हो, मगर प्रॉबिलिटी है कि पहले वो दो इवेंट्स यानी कि टी प्लस टी में दो इवेंट्स हों। ये भी हो सकता है दोनों से, यहाँ पे उसने काउंट नहीं किया और यहाँ पे उसने मतलब कि वन ही था, वन ही काउंट हुआ, वन आ गया, यहाँ पे से काउंट ही नहीं कर सका, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि पी सी ऑफ एन टी गिवन वन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज लैम्डा एच एंड प्रोबेबिलिटी दिस ओ एफ एच, ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे ओ एफ एच ही रह जाएगा, ओ एच का तो हमें रूल पता है सादा सा, तो ओ एफ एच आ गया और probability that this is equal to 1 and is equal to 1, this means you have counted, so this will be pt into lambda h plus oh. So after all of that mathematics, what is the final crux? The crux is that now in problems you might have a non-homogeneous Poisson process and you will not have the requirement of stationary increments. All right, so at different times the rate of your process, the rate of arrival of customers, the rate of goal scoring, they could change, but still the overall process will be a Poisson process, but a non-homogeneous Poisson process. So we will just start with this problem and we will, the long problem, we will end it in between and then we will mark your attendance. So I'll just take 2 minutes and I will mark your attendance. All right, so let us say this is a company which runs a hot dog stand. It makes hot dogs from 8 a.m. to 5 p.m. It says that from 8 to 11 a.m. customers, they arrive and on the steady increasing rate. So customers are increasing. At 8 o'clock, some comes, at 5 comes, at 9 increase, 10 increase, 11 reaches a maximum of 20 customers. At 11 a.m. you have the maximum customers which are 20. Now from 11 to 1 p.m. the rate of 20 remains the same. But from 1 p.m. to 5 p.m. when it closes down, it decreases, so that from 20 it comes to 12 at 5 o'clock. All right, this is the data. Now let us see what is the question. So we assume the number of customers arriving at this burger stand or hot dog stand, Seagbird stand during disjoint time periods are independent. So they are independent in number of customers coming in from 8 to 9 is totally independent from the number of customers coming from 9 to 10. Then what is the probability model for this hot dog stand? And what is the probability that no customers will arrive from 9:30 to 8:30 to 9:30? And what is the expected number of arrivals in this period?
So first thing is that you can see that the rate is changing. So, and we also know they are independent, so it is a very good Poisson process, but a non-homogeneous. So first of all, we try to map the value of lambda t. All right, the time is up, so we have 3 minutes. I will just mark your attendance. If you have any questions, you can ask before I start your attendance. All right. Roll number 3. Present, sir. Roll number 4. Yes, sir. Roll number 6. Present, sir. Roll number 9. Present, sir. Roll number 10. Present, sir. Roll number 18. Present, sir. Roll number 24. Present, sir. Roll number 27. Present, sir. Roll number 28. Yes, sir. Roll number 30. Present, sir. Roll number 34. Present, sir. All right. Thank you very much. Your attendance has been marked. I think all of you are present. So I'll end the lecture. So, all right, thank you. So in next lecture, you might have, I will ask questions from, Markov or Poissons if we get time.